Hello everyone, welcome back to my channel. After looking the reduced syllabus for grade plus 2, today we will see the reduced syllabus for grade plus 1 or the deleted portion by CBSE for grade plus 1 or 11 class. So let us move onwards with unit number 1, diversity in living organisms. From this unit, first of all we will take chapter number 1, the living world. Topics: taxonomy and systematics, tools for the identification of an organism like museums, zoological parks, herbaria, botanical gardens, and keys has been reduced or deleted from your syllabus. After this, the next chapter is chapter number 3, which is plant kingdom. From this chapter, topic angiosperm, which includes classification up to class, characteristic features of angiosperms, and some examples have been reduced. This topic have been reduced from your evaluation part. इसके अलावा जब दो टॉपिक्स या फिर हम कहें दो चैप्टर्स जो आपके रह जाते हैं, विच इज चैप्टर नंबर 2 बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन एंड चैप्टर नंबर 4 एनिमल किंगडम, उनमें कोई चेंज नहीं आया है, राइट? नाउ वी विल मूव फर्दर विद चैप्टर नंबर 5 from Unit 2, Structural Organization in Animals and Plants. Chapter number 5 is Morphology of Flowering Plants. From this chapter, morphology and modifications of flowering plants like root, stem, leaf, fruit and seed. ये different parts हैं plants के, इनकी modification, इनकी morphology. ये जो topic था, इसके साथ साथ description of the families में Fabaceae family include की गई थी, तो ये topics जो हैं ये delete कर दिए गए हैं. Then chapter number 6, anatomy of flowering plant, has totally been reduced from the evaluation part of your syllabus. Okay. Beside these topics, in case of chapter number 5, chapter number 3 and chapter number 1, जो बच जाते हैं उसमें topics वो आपको पढ़ने हैं. सिर्फ अभी तक चैप्टर नंबर 6 जो है वो आपका डिलीट किया गया है. इसके अलावा 3 चैप्टर्स और टोटली डिलीट किए गए हैं, ओके, जो कि हम आगे फर्दर देखेंगे. तो पहले हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 7 की, दैट इज स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स. फ्रॉम दिस चैप्टर टॉपिक्स दैट इज मॉर्फोलॉजी, एनाटॉमी एंड फंक्शन ऑफ डिफरेंट सिस्टम ऑफ एन इंसेक्ट व्हिच इज कॉकरोच हैज बीन डिलीटेड. कॉकरोच को हम स्टडी करते थे एज अ स्पेसिमेन फॉर एन इंसेक्ट फॉर द फंक्शन, morphology and anatomy of different system of an insect. Now coming up to the next unit, plant physiology, chapter number 11 and chapter number 2 have been totally reduced or deleted from your syllabus. मैंने पहले भी बताया है कि चैप्टर नंबर 6 डिलीट किया गया था. इसके अलावा चैप्टर नंबर 11 और चैप्टर नंबर 12 भी डिलीट कर दिए गए हैं फ्रॉम प्लांट फिजियोलॉजी. Now let us take chapter number 15, that is plant growth and development. From this chapter, some of the topics like seed germination, phases of plant growth and growth rate, conditions of growth, differentiation and redifferentiation, sequence of developmental processes in plant cell, seed dormancy, vernalization and photoperiodism has been deleted. But the remaining topics in chapter number 15 you have to study, which is growth regulators like auxin, gibberellin, cytokinin, ethylene and abscisic acid, वो आपको पढ़ने होंगे. Now moving onwards to unit number 5, human physiology. From this chapter number 6, digestion absorption has been deleted, totally deleted. ऐसा नहीं है कि उसमें कोई चेंज आया है, कोई चेंज नहीं है, वो पूरा का पूरा डिलीट कर दिया गया है आपके सिलेबस से, जिसमें कि हम स्टडी करते थे एलिमेंट्री कैनाल ऑफ ह्यूमन बीइंग्स, सम गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल हार्मोन्स एंड देन वी यूज्ड टू स्टडी सम ग्लैंड्स एंड डिजीजेस रिलेटेड टू द डाइजेस्टिव सिस्टम लाइक कॉन्स्टिपेशन, वॉमिटिंग और डायरिया, एब्डोमिनल पेन. ठीक है, तो ये जो चैप्टर है आपका ये भी पूरे तरीके से डिलीट कर दिया गया है आपके सिलेबस से. नाउ वी विल सी चैप्टर नंबर 20 फ्रॉम दिस यूनिट ओनली, दैट इज लोकोमोशन एंड मूवमेंट, व्हिच includes types of movement like ciliary, flagellar
and muscular skeletal system and its function, joints, disorders of muscular skeletal system. Disorders में like tetani, myasthenia gravis, arthritis, then we had gouts and osteoporosis. So these were the disorders which we used to study earlier, but now these topics have been deleted from locomotion and movement. इसके अलावा जो बचा हुआ टॉपिक है जैसे कि skeletal muscle, contractile proteins and muscle contraction, that is still there, तो आपको पढ़ना है. Now coming towards chapter number 21, neural control and coordination. From this chapter, reflex action, sensory perception, sense organs, elementary structure, functions of eye and ear have been reduced. पहले ये बहुत मुश्किल लगता था इसका डायग्राम स्टडी करना ईयर और आई का, बट नाउ इट इज अ रिलैक्सेशन फॉर स्टूडेंट्स कि ये जो आपके टॉपिक्स हैं ये डिलीट कर दिए गए हैं सिलेबस से. तो ये बात थी आपकी थ्योरेटिकल पोर्शन की. तो बच्चा मैं अभी भी बता रही हूँ कि ये जो आपके टॉपिक्स जितने भी मैंने यहाँ बताए हैं ये पूरे तरीके से डिलीट नहीं हुए हैं. इनके अलावा जो बचे हुए टॉपिक हैं वो आपको आपके बोर्ड एग्जाम के लिए स्टडी करने हैं, एक्सेप्ट चैप्टर नंबर 6, 11, 12 एंड 16. वो चैप्टर्स टोटली डिलीट कर दिए गए हैं. लेकिन इसके अलावा जितने भी चैप्टर्स मैंने यहाँ आपको बताए और उनमें जो टॉपिक्स बताए सिर्फ वही रिड्यूस हुए. Now let us move towards your practical portion. From the practical portion, the deleted practicals are description of family Fabiaceae, preparation and study of TS of dicot and monocot roots and stem, study of osmosis by potato osmometer, study of plasmolysis in epidermal peak, and then comparative study of the rates of transpiration in upper and lower surface of leaves, test for the presence of sugar, starch, proteins and fats in suitable plant and animal, test for the presence of urea in urine, test for the presence of bile salts in urine. So these are the practical experimental portion of your practical जो कि हम experiment करके proof करते थे. Now looking forward towards the spotting part, tissues and diversity in shape and size of plant cells through temporary and permanent slide, different modification in roots, stems and leaves, different types of inflorescence, human skeleton and different types of joints with the help of virtual images and models only have been deleted from your syllabus. So thank you guys for watching the video. Like it if you really liked it and don't forget to subscribe to the channel.